common question that keeps coming, Shreya, stretch marks. I'm having a lot of stretch marks. What can be done to remove those stretch marks after delivery? So something very simple. So my Dvija logo has got heart inside the tummy. There's a beautiful line. I don't know who have written it, but I've read it once. कि stretch mark आपके बच्चे के पेट के अंदर से ड्रॉ किया हुआ उसका मैप है. It's a womb map of your child. कितना खूबसूरत लगता है ना सुनने में. आपका बच्चा अंदर से जो मार्क्स क्रिएट कर रहा है. Apart from these things, stretch mark is nothing but the overstretching of muscle. अगर आपका muscle वो particular stretching नहीं ले पाता है तो उसका stretch marks हो जाता है. And yes, at times they are really uncomfortable. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? So for all of you जो pregnant है, right from 3rd month of your pregnancy, प्लीज़ ध्यान रखो कि आप ऑलिव ऑयल लगाओ. स्ट्रेच मार्क्स होते हैं हिप्स पे, ब्रेस्ट पे, स्टमक पे और थाइस पे सबसे ज़्यादा. आप रात में लगाना कंफर्टेबल रखते हो तो आप रात में लगाओ और पूरी रात रखो, नहीं तो नहाने के बाद लगा दो एंड कीप इट फॉर द फुल डे. सो ऑलिव ऑयल अगर लगाओगे तो इट विल गिव यू अ वेरी गुड कवरेज एंड इट विल रिड्यूस, इट विल मिनिमाइज स्ट्रेच मार्क्स टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. आफ्टर डिलीवरी आपका बच्चा ऑलरेडी हो गया है, बहुत सारे स्ट्रेच मार्क है तो श्रेया क्रैक कर सकता है. सो वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन 100% ट्राई इज ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल. इन दो चीज़ों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स कर दो और उसका मसाज करो फॉर 5 मिनट्स एवरी डे बेसिस पे नहाने के बाद एंड कीप इट लाइक दैट पूरा दिन के लिए. सो आपको रियलाइज होगा कि स्ट्रेच मार्क काफ़ी हद तक कम हो गए. दिस इज सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज ऑलिव ऑयल में विटामिन ई. सो विटामिन ई की जो कैप्सूल मिलता है उस कैप्सूल को काट देना है और उसका जो मिक्सचर होता है वो डाल दो और उसका बहुत अच्छे से मिक्सचर बना के उससे मसाज करो. इवन दैट विल रिड्यूस योर स्ट्रेच मार्क्स, द अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेच मार्क्स टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. थर्ड थिंग दैट यू कैन 100% ट्राई इज एलोवेरा जेल. फ्रेश एलोवेरा जेल ले लो, उसमें विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल डालो एंड मसाज विद दैट. दैट विल रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेच मार्क्स ऑन द आउटर स्किन. Next thing that can help, Dvija smoothing scrub. So there's a lot of stretching, a lot of dryness, then at the same time a lot of itching. So Dvija smoothing scrub, it's available on Amazon, don't worry. It's the mixture of more than 2 natural herbs which reduces that itching, that dryness, gives a beautiful glow and a texture to your skin. And this will also help to reduce or minimize the appearance of stretch marks on your skin. So this is smoothing scrub. How to use smoothing scrub is basically you just massage it at the time of bathing for 2 to 5 minutes and see the difference. So this is what you can do post delivery to reduce your stretch marks. One more thing, a lot of girls say, Shreya, my child is now already 2 years old. Will all these things help? The way I have explained in the video, like pregnancy stretch marks, then the pregnancy oil massage that you do, that's one thing. Post delivery, how much your days have happened for your delivery, if you wish to reduce those stretch marks, use these techniques. They actually help to reduce the appearance of stretch marks. Try this home remedies and let us know how do you feel. Thank you so much all of you. Have a great time and bye.